इस क्वेश्चन में हमें प्लॉट गिवन है, 2 प्लॉट्स गिवन है, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट आर वर्सेस टाइम के प्लॉट्स हैं और हमें ऑर्डर बताना है कि फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा। तो हमें पता है ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन। तो हम लोग सबसे पहले जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करके चेक करते हैं कि ये दोनों ग्राफ में से कोई ग्राफ उसमें आ रहा है क्या। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ वेरी नहीं करती है, ठीक है। तो उसमें हम कैसे लिख सकते हैं, रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो ये किसके बराबर आ जाता है, के की, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ए नॉट से ए के बीच में, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है, के बाहर t। तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो ये इक्वेशन जो है ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का प्लॉट आ रहा है। अब मैं अगर a को r से रिप्लेस कर दूं तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है, बन जाएगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन का प्लॉट करूं तो ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, जिसमें r कॉन्सेंट्रेशन y एक्सिस पे, टाइम x एक्सिस पे, तो माइनस एम एक्स प्लस सी का इस तरीके से प्लॉट आएगा और ये वैल्यू हो जाएगी आर नॉट, ठीक है। तो अगर हमारा सेकंड प्लॉट को हम ऑब्जर्व करें तो वो इससे मैच कर रहा है, तो सेकंड प्लॉट किसका है हमारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। अब सिमिलरली अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है a इज इक्वल टू ए नॉट e टू द पावर माइनस के टी, ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग a की जगह r ले लें तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहाँ पे अगर हम ln ले लें तो ln r इज इक्वल टू ln आर नॉट माइनस के टी आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का प्लॉट बना दूँ तो ये प्लॉट इस तरीके से आएगा फर्स्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे टाइम हो गया, y एक्सिस पे लॉन r हो गया और नेगेटिव स्लोप का ग्राफ आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln r नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब तो रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, तो फर्स्ट हो जाए, ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। Hello, so let's start solving the question. And question says that for a reaction scheme A to B and B to D having the rate constant K1 and K2, right? So if the rate of the formation of B is set to be 0, right? It's set to be 0. Then what is the concentration of B, right? So here are the options. So let I assign it. Oh, this is option A, this is option B, this is option C, and this is option D, right? So we have to find out the answer. So let's start solving this question by conceptually. And the question says that the rate of the formation of B, what does this mean? That means the rate of the formation of B, this is the rate of formation of B, is set to be 0. That means it's set to be 0, right? So now according to the equation that is given in the question, that if A is forming B and B is forming D, right? And when A goes from A to B, its constant is K1, and B to D, its constant is K2, right? So now, according to the principle of kinetics, if I write the rate of the formation of B, rate of the formation of B is equals to, then what will be the value of B? Since B is forming when we go from A to B, that means according to the principle of kinetics, the rate becomes K1 concentration of the A, right? So plus sign is here because B is forming, right? And minus sign is here because B is decreasing, because when we go from B to D, right? So K2 concentration of B, right? And all this set is equal to 0, right? So we have to find out the concentration of B. So simply it's a simple mathematics. So just we have to rearrange it. So just by rearranging we can get concentration of A is equals to K2 concentration of B, right?
So from here we can get the value of B, right? It comes out to be K1 by K2 and concentration of A, right? So the value of B comes out to be K1 by K2 and concentration of A. So let's check the answer, and options are you can see that options A, B and C. Here A, right? K1 minus K2 into A, right? This is not the right answer, right? K1 K2A, this is not also right answer, because we have answered K1 by K2. This is also right answer. So correct answer is D, right? K1 by K2 into A, right? So this is the answer. Though we can say that the concentration of B, when we set it to equal to 0, the value of B comes out to be K1 by K2 into A, right? So this is the answer. Hope this answered your question. So thank you. Hello, the question says that for the reaction 2A plus B gives C, the values of initial rate at different reactant concentration are given in the table. So the overall order of the reaction is, so we need to find overall order of the reaction. So we have concentration of A, concentration of B and initial rate. So let's solve this question. So we have reaction 2A plus B gives C. So according to rate law, rate for this reaction is equal to K reaction constant, A concentration to the power alpha, B concentration to the power beta. So let's say this is our first experiment and this is second and this is third. So from first experiment, R1 is equal to 0.045, concentration of A is equal to 0.05, concentration of B is equal to 0.05. So from rate law we can write 0.045 is equal to K 0.05 to the power alpha 0.05 to the power beta. So now from experiment number second, R2 is equal to 0.090 and concentration of A is equal to 0.10, concentration of B is equal to 0.05. So from rate law we can write 0.09 is equal to K 0.1 to the power alpha multiply by 0.05 to the power beta. So from experiment number third, R3 is equal to 0.72, concentration of A is equal to 0.20, concentration of B is equal to 0.1. So now from rate law, we can write 0.72 is equal to K 0.2 to the power alpha multiply by 0.1 to the power beta. So now let's say this is our equation first, this is our equation number second, and this is our equation number third. So now if we divide equation first with second, we will get 0.045 divided by 0.090 is equal to K 0.05 to the power alpha multiply by 0.05 to the power beta divided by K 0.1 to the power alpha multiply by 0.05 to the power beta. So now we can cut K with K 0.045 with 0.0902 and 0.05 to the power beta with 0.05 to the power beta. So now this is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2 to the power alpha. So from here alpha is equal to 1. So now if we divide equation number 2 with equation number 3, we will get 0.090 divided by 0.72 is equal to K 0.1 to the power alpha multiply by 0.05 to the power beta divided by
K 0.2 to the power alpha multiply by 0.1 to the power beta. So now we can cut K with K. This implies 1 by 8 is equal to 0.1 divided by 0.2 to the power alpha. Alpha is equal to 1 multiply by 1 by 2 to the power beta. So now this implies 1 by 4 is equal to 1 by 2 to the power beta. So this implies 1 by 2 to the power 2 is equal to 1 by 2 to the power beta. So therefore beta is equal to 2. So now we got alpha is equal to 1 and beta is equal to 2. So overall order of the reaction is equal to sum of orders of each reactant. So order of A is 1 and order of B is 2. So therefore overall order of the reaction will be 3. So our answer will be 3. 3 is our answer. Thank you.